it amoeba better? TT. Is it better now? Yes, it is fine. It is good now. ओके। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल दूं? बोल दें। अच्छा, मुस्लिम ओके। है आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। डन। सो माशाअल्लाह। इसके अलावा भी कोई सूरा सीखा है क्या? सिर्फ इतने भी खत्म हो गया आपका कुल इस्लाम? हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलिए, वाह सही है, वाह सही है, Yeah, सही yeah, है। yeah, आने दे, आने दे। yeah, yeah. So, the person, अब एक मैं बांग्लादेश की हूँ। एक actually I got to know about you guys once when you were interview साहिल भाई साहब आप जब interview कर रहे थे आसाद नूर, since I हम्म। follow him, उसके जरिया में आपके सजेशन आए। और क्या बात करेगा रे बाबा? इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो कैसा बात होगा रे बाबा? आ इंटरनेट गई, आ नहीं गई, वापस आ चलता गई, है। वापस आ गई, वापस आ गई, वापस आ गई, बैकस्टेज, बैकस्टेज। ऐड के करें। लेकिन यार मोमिन अमेरिका चले जाए उनका इंटरनेट फिर भी खराब रहता है। I don't know why it's happening. अ, अ, तो फिर मैं जी को भी जी को भी फॉलो करने लगे। तो इट्स बीन 23 ईयर। या इनका इंटरनेट फिर फिर गायब, टूट गया है। फिर आ गया। चलें, कैसा वापस ऐड इंटरनेट करें। है यार? इस पे इंटरनेट वाले पे केस करना चाहिए। I don't know why it's happening. I don't know. आप मोबाइल डेटा पे है या वाईफाई पे कनेक्टेड है? वाईफाई मैं वाईफाई से कनेक्टेड है? वाईफाई पे ही कनेक्टेड हूँ। ओके, आपका वाईफाई आपका साथ नहीं दे रहा, आपके पास डेटा कनेक्शन है? नेटवर्क मतलब आप मोबाइल अब जो ठीक भी है? कनेक्शन आप। अब ठीक है? ठीक है, बोलते बोलते आप गायब हो जाती है। बात कैसे होगी ऐसा? अच्छा, अच्छा। तो अम, हाँ, जो जो प्रॉब्लम है कि रेफरेंस नहीं मिलती थी 23 years ago जब मैं आई वाज 16। बट देयर वाज अ स्ट्रगल व्हेन आई वाज यंग एट दैट पॉइंट। जो आपके 40 year old के मोमिन बहुत कह रहे ये इस्लाम नहीं तो कौन, और कब कोई मोमिन आपके वहाँ आके बोलते हैं कि आप सिर्फ इस्लाम के पीछे ही क्यों हो। मेरे एक क्वेश्चन है, मैं उन इट्स माय आंसर टू देम। इफ आई एम मैरिड टू अ गाय who has been torturing me right and left and I leave the guy, किसके बारे में गाली गलौज करूं? मेरे नेबर की हस्बैंड के बारे में, और जिसके साथ मैं रह रही हूँ और हम्म। डिवोर्स हुआ, और जिसको मैं छोड़ दी हूँ बिकॉज वो बदतर आदमी थे। गॉड क्या से बात है? for God's sake, that's not real. I'm just using metaphor. Though I believe मेरे metaphor जो use कर रहे हो, it's not like Zakir Nalayek. मैं जैसे इट्स अ गुड एग्जांपल। yeah, it's at least appropriate example। तो मैं इसके लिए ही मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं इस्लाम में थी तो मैं इसके बारे में ही ना बात करूंगी। मैं इसके बारे में तो जान बूझ के सीख के आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अब आप लोगों को इस बारे में स्ट्रीम में बात कर रहे हो। इट्स जस्ट नॉट ओनली थिंग दी वे वो लोग आयत और ऑल दिस क्या कहते हैं वो हदीस के नंबर दे दे के बात करते हैं ना, रिफ्यूट रिबॉटल करते हैं वो सब लोग। उसके अगेंस्ट में कभी कभार मुझे नहीं पता कौन लोग वहां पे जाके बैठ के चुपचाप सुनते हैं। तो मेरे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास कि जो आप वाह जी, वाह! ये एक्स मुस्लिम ही फिर है। इंटरनेट। हाँ, एक्स मुस्लिम है लेकिन एग्जाम्पल बड़ा तगड़ा दिया है इन्होंने। हाँ, कुरान जो मैं आई डू नॉट केयर व्हाट हिंदू रिलीजियन इज स्टेटिंग हियर बिकॉज दे आर नॉट इम्पोजिंग their law on me। Christianity is not about today। They are not imposing all these things. All look at all the Christian countries, all of us, wherever we are, if अगर हम Islamic law इम्प्लीमेंट जहाँ पे नहीं होते वहां पे हम बहुत सुकून से रहते हैं। बॉटम लाइन।
जो यहाँ पे जो बातें करने आते हैं कि तुम इस्लाम के बारे में क्यों ना बातें करते हो, क्योंकि मैं इस्लाम से हूँ ना, मैं तो मुस्लिम हूँ ना। मेरे जो तकलीफें हैं वो तो इस्लाम से आ रही है, कोई हिंदू तो नहीं कर रहा है कि तू ऐसे चल। Oh man. दीदी का इंटरनेट फिर गया। आई एम नॉट फिर इक्वल टू अ ह्यूमन बीइंग। मेरे डिसीजन, लाइफ के डिसीजन कोई और ले रहे हैं, तो इट्स लाइक मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? एक हिंदू आके बोलेगा यहाँ पे? नहीं, मैं बोलूंगी, मुझे ओन करना है। और क्या 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 होते हैं, आई नो। तो इस बारे में फिर गया इंटरनेट, फिर वापस हम आया। लोग जो मुशरिक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये सब बहुत दिक्कत। एंड आई फील फॉर इट सिंस चाइल्डहुड। जब एक कंडीशनिंग होते हैं हमारे यहाँ पे, सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम एजुकेशन, सो कंडीशनिंग इज अ बिच। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। सो जब आप एक कंडीशनिंग में होते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सब मुस्लिम होते हैं, वहाँ पे तो आपको, अगर मैं एक मल्टीकल्चर में रह रही हूँ, क्यों मेरे सब आसपास के लोग मुस्लिम हैं, क्यों हमारे आसपास के लोग हिंदू होते भी हमारे साथ उठ बैठ, क्यों क्यों ये एक्सक्लूसिविटी? वेयर इज द इंक्लूजन हेयर? नहीं ना। तो वो सब तो क्वेश्चन करना पड़ेगा सबको। जब मैं क्लेम करना चाहूंगी कि ओ हमारे जब भी वुमेन राइट के बारे में, ओ पायनियर, इस्लाम इज अ पायनियर ऑफ वुमेन राइट, देन व्हेनेवर स्लेवरी कम्स, ओ इस्लाम इज अ पायनियर ऑफ स्लेव्स राइट। जब भी जो भाई भाई सब कुछ आप अगर पायनियर हो, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो। सफरिंग्स तो हमारी है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दो आई हैव मेंशन दोस थिंग। बट अब मैं नॉन मुस्लिम कंट्री में रह के मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आई डिसाइड who I am married to, I decide what subject I will study, I decide how many kids I will have, I can decide how I will clothe, I decide what I would drink. Nobody else get to decide that. I will decide it. It's me. I have all the right to do my shit. No religion get to decide that for me. And absolutely coming from a Muslim background. And thank God my parents told me about this. And बहुत जबरदस्त। and some of these people, no, मेरे parents जो है वो मुस्लिम ही थे, पर कभी ऐसे कुछ एक्सट्रीम इवेंट, आई लेट मी गिव यू एग्जांपल। मेरे डैड बहुत progressive kind, मेरे mom used to dance, my mom used to sing every day, practice, she never performed but she always sang, practice at home. तो हम लोग वो करते थे, मेरे टीचर थे म्यूजिक के। तो एक दिन one of my sibling got married, and I'm not gonna say he or she, उनके जो स्पाउस थे वो बहुत रिलीजियस थे, तो वहाँ पे एक मिलाद हो रहे थे। तो मिलाद के समय मेरे एग्जाम थे, तो एग्जाम थे मेरे जो ब्रदर के स्पाउस, सॉरी माय ओके, माय सिबलिंग के स्पाउस ने मुझे बुलाया, तो के प्रे कर लो। तो ये मेरे जो यहाँ पे खातून है, उसके एग्जाम है, हुजूर आप दुआ कर दीजिए। मेरे पिताजी जो है थे, वो नहीं रहे मेरे साथ अब। तो उन्होंने स्क्रीम करके बुलाया मुझे, जे तंजीना, लाइक यू कम, आई एम सॉरी। सो I went there after finishing up the prayer, and my dad said, "You know what? Why you have exam, आपके अल्लाह के लिख नहीं देंगे, आपको पढ़ना चाहिए, दुआ काम नहीं करेगा tomorrow." That's all my dad said to me. So that's what I want to say, that this is not right what's going on. People like Zakir Nalayek,
जो सब बातें करते हैं, these are not right. And guess what, like my great grandfather, my हम्म। दोबारा ऐड करें, आ गई वापस। they know Islam. My great grandfather did graduate from Aligarh University. They knew Islam. Sorry, they knew Islam. And they knew that all kinds of shams that there were, and I knew those things coming from a family, and my parents, the kind of awareness my grandfather, मेरे जो grandfather, my mom के dad थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस्लामी हिस्ट्री में मेजर थे। वो भी नहीं किया वो सब। उन्होंने उनके सब बच्चे बच्चियों को म्यूजिक स्कूल, डांस स्कूल में भेजते थे। ठीक है, तो what kind of is this? Like then अगर मेरे एक question है, तो कौन, the kind of Islam we have in India, Bangladesh, my conversation will be too long if I talk about it. But the thing is, they actually studied during when they were doing the business and everything with Asia. They studied all the culture, and they, in each area, when you study, if when you interview people, look at the history, different area would say, tell you that how Islamic ideology was, and like we have different history, how this ideology entered, and the way Bangladesh was Buddhist majority country, and the ideology they sold to us is through Sufism. Okay, and वहाँ पे very whitewashed ideology. They we did not read the Quran in any other language but Arabic. Okay, but thing is, if you, the reason, that's how they kept us blind. That's how they kept जी us blind. And then when we started now, and I have, like, in 1999, after 2000, there were so many attacks in Bangladesh, and 9/11 happened. Like, really, this is the Islam? Like, I was kid at that time, and that word struck me, that hey, I have to, like, what kind of Islam they are learning. My dad said they are not wrong. Then I looked into it. I was reading the translation. My mom used to say, hey, don't get confused. Turning, kind of praying, the kind of thing, as they were growing up. The area that I picked, some of my friends said, hey, we are Muslim, why are you studying in this area? I'm not gonna say the subject that I studied, my expertise, but I'm like, no, I'm gonna learn it. And as I learned, I was like, अच्छा अम्मीबा जी yeah. सिर्फ एक चीज बोल दूं कि बीच बीच में आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो आई नो कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालना चाहती है और एक मौका भी आपको मिला है, बट थोड़ा सा सोच समझ के आप अपनी बात रखिएगा सो दैट Sure. यू डोंट रिवील एनी पर्सनल डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ। Yeah, sure. So, like, that's how I got to know that. And but जब growing up, मेरे पास उतनी information भी नहीं थे. अब जब different side, I'm not gonna say the name of it, since I'm a Bengali, there are different side. Kids, men and women are working hard to put those, and you guys are inviting those really very famous people in Islamic world to, hey, come talk to us. Why aren't they talking to you guys, right? That's the fair question I can have. So, as a Muslim, that's what, and yeah, it's been 23 years. So, I don't talk about it. I
never disclose, but people can tell from my lifestyle. But ये आप जो बोल रहे हैं, as long as you are not criticizing, you are living in a country where you are safe, it's okay. But what's going on in Bangladesh at this point, the pictures that I can see, young kids are flying what's that the flag, black and white flag with la ilaha illallah Muhammad Rasulullah on them. हम्म It's sad what you said a minute ago. Islamic, these things are here. It will come back. It's sad. It will हम्म come back because 1971, we came out of this war. We were like, okay, cultural, and we had our struggle. And then it's just back and forth. I'm just tired of it. Like in 2000 to 2006 in our country, like 50 plus districts were bombed by these people, Islamic group. And then in 2009, 10, it got better. Again, it started. Like these people, these are cockroaches. I'm sorry, they are cockroaches. You need, I don't know, like they need to be controlled. Um, uh, it's a parasitic. I'm हम्म sorry. तो I have अमीबा जी, word for it. Yeah. अमीबा जी, ये कब आपने इस्लाम से बाहर निकलने का डिसीजन लिया था? 23 years. I'm quite old. I'm not that young. I'm yeah, yeah. अच्छा, Uh, जब आप 23 साल की थी तभी आपने इस्लाम छोड़ दिया no, था? 23 years ago. I'm not 23 अच्छा, right now. 23 इयर्स अगो Years आपने ago. इस्लाम छोड़ा, मतलब When I काफी was पुरानी 16. एक्स मुस्लिम है यहाँ पे आप। Yeah, yeah. But मतलब as I 16 साल said, में ही आपने छोड़ दिया था? yes, yes, अरे वाह! because as I said, my environment allowed me to look into things, हम्म question, and yeah, and then seeing the change in front of me, kids, those who are having fun, all of a sudden they get into college, they are telling me what subject to study, not to study, and this kind of thing, and what to talk about, and all of a sudden they are going to cooking school and things like that. हमारे थोड़ी ब्रेक होते थे उस टाइम पे, no, I don't have any problem with joining cooking school, but it's just जब some girls going to cooking school and my parents are sending me to take some computer courses, that's where like I saw like, okay, why we are so much in rush to becoming a woman. I'm only 16, 17, 18, so that those are the thing. Then people are telling that as I said, मैं बांग्लादेश में से हूँ, वहाँ पे ऐसे तो होते हैं फैमिली मेंबर्स की शादी होने, मेरे फैमिली में एक स्ट्रगल चल रही थी तब, तो उस टाइम पे मैं 12th ग्रेड में 18 साल की थी, तो उन्होंने कहा कब कोई कुछ रिलेटिव आके बोल दिए कि इसको शादी दे दो, शादी करा दो। so, मेरे डैड जो थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सुना, बट वो उसको जो करना था उन्होंने कहा करा, मैं मुझे जो करना था मैंने कहा, पीपल से दिस थिंग, but again, at least back then these mullahs used to deny all this. Now they cannot even deny when you question on Aisha, when you question on all these women, all these kept. So that's a good start. Again, I'm not hopeful what I have seen in Bangladesh, because this needs to get out of the way. And in many countries, we can see whenever there is extremism, it goes, it comes back. See, as you use the example of Iran, um, even back then, when Iran got into this extremism, before that, Arab was not even that extreme, but that also got into, and then this king will die or go away. Another, we don't know how they stabilize, because
it's very much a thing. Like if there is a king or a government, so that those who are running their country according to Sunnah, that always impacts Muslim majority country. Not only that, any area, even in right, what's going on in Europe and in a small way in America too. It's sad. In Canada, Right. you look at these places. It's like so I don't know what to hope for actually. I'm not सही saying that. तो I'm not. Yeah. ठीक है अमीबा जी काफी बातें आपने बताई आपने और बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपनी सारी यानी जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है आई एम श्योर कि एक अकल वाला अगर मोमिन होगा तो और खास करके जो खवातीन होंगी उनके समझ में आएगी कि भाई ये किस तरीके से आप लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं एंड व्हाई यू कैन नॉट टेक द डिसीजन। तो थैंक यू सो मच अमीबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने का। और अमीबा जी के लिए एक गुलाब का फूल भेज दे सारे लोग। पुरानी एक्स मुस्लिम है, 23 साल पहले ही इन्होंने इस्लाम को त्याग दिया था एंड शी इज वेरी ब्रेव। Thank you. जी Yeah. थैंक यू सो मच। Okay, I'm जी going. Thank you for the platform. Bye. जी जी जी, ख्याल रखिएगा अपना। Yeah. लाइव चैट फ्लावर्स से भर चुकी है। ऑसम। अच्छा साहिल साहब, ये वीडियो चलाना है क्या? हाँ चलाओ चलाओ। ये कहाँ पे है? ये शरिया में एक उसूल है कि आई विटनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही है। अभी कैमरा था जो सीसीटीवी आने लगे तो ये डिस्कशन हुआ 15 साल पहले जी, जब वीडियो आ गए। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ वीडियो एविडेंस है वो काफी नहीं, हद पेनल्टी देने के लिए। मिसाल के नाम पे आपने एक चोर को देखे ताला तोड़ा है, तिजोरी तोड़ा है, चोरी कर गया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी पे आ गई, कोई आई विटनेस नहीं है, तो शरीयतन आप उसको हद पेनल्टी नहीं दे सकते शरीयत के क्या शरीयत के हिसाब से। शरिया में एक उसूल है पस 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 पस। सुना है मतलब आपने? यानी आपके पास आई विटनेस अगर नहीं है तो ना आपकी चोरी साबित होगी, ना आपका मर्डर साहिल साबित साहब, होगा, ना आपका रेप साबित होगा। सीसीटीवी जो है वो उसका कोई यही नहीं है, माना ही नहीं है। आई विटनेस जब तक नहीं हो। हाँ। ये बात जब मैंने बोला था तो यहाँ पे मुसल्टों को कितनी आग लगी थी, पिछवाड़े के सुराख से लेके बहुत मुंह के लगती है। बालों तक। हाँ। तो अब इनका मुल्ला बोल रहा है तो इसके खिलाफ क्यों नहीं भौंके? इस वीडियो को पब्लिसाइज क्यों नहीं किया गया पहले? ये अब क्यों हो रही है? नहीं, ये रिसेंट तो पाकिस्तान का लग रहा है एडम साहब। अरे नहीं, बहुत पुरानी वाली बात है इसकी, ये पहले भी सीसीटीवी अच्छा। वाली, इसने पहले भी बोला हुआ है, लेकिन चलो शायद इसने रिसेंटली दोबारा, यार ये तो वैसे टेप रिकॉर्डर है ना, सेम बात रिपीट करता है। तो ये हो सकता है ये वाली नहीं हो। वो एक और दफा तुमने वीडियो चलाई थी, मैंने कहा था बड़ी पुरानी है, पता लगा वो उसने दोबारा बोला पाकिस्तान के अंदर। हाँ। तो ये तो जोकर लाइक तो वैसे नहीं टेप रिकॉर्डर है, लेकिन भाईजान ये लोग सेम शरिया वापस मांगते हैं। दैट्स द होल आइडिया। शरिया चेंज नहीं होता, इन्हें गवाह चाहिए है सीसीटीवी की अम्मा डैडी। भाई ये एक 7वीं सेंचुरी की कल्ट है जिसको 7वीं नहीं तो 8वीं सेंचुरी में खत्म हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। इट्स नॉट कंपैटिबल विद टुडेज वर्ल्ड। अच्छा, मैंने फिर ये वीडियो एडम साहब, मैंने ये वीडियो जो है फिर मैंने 2-3 लॉयर्स को भी भेजा और मैंने पूछा भाई कि सीसीटीवी फुटेज जो है अगर वो, उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक में जाता है कि भाई वो टेम्पर्ड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, वो सब होने के बाद उसको कंसिडर किया जाता है सीसीटीवी फुटेज। मतलब बोलने का मतलब ये था उनका कि आई विटनेस होना जरूरी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके पास अगर है और दूसरे अगर एविडेंसेस मौजूद है आपके पास, तो अगर कोई आई विटनेस नहीं भी होगा तो कन्विक्ट होगा इंसान। सर पूरी ये हमारा लॉ दुनिया कहता है। में, पूरी दुनिया में कैमरे क्यों लगाए जाते हैं?
इसीलिए तो लगाए जाते हैं। लोग आजकल अपनी गाड़ियों में कैमरे लगाते हैं रोड एक्सीडेंट्स को फुटेज रखने के लिए। क्यों रखे जाते हैं सर? उसकी बेस के ऊपर दे आर एविडेंस, दे आर द बेस्ट एविडेंस इन द वर्ल्ड, रिकॉर्डेड है। yes, सिर्फ उसकी देखी जाती है कि वीडियो टेम्पर्ड तो नहीं है, उसके लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स है, दे वेरीफाई, एंड इफ इट इज प्रूवन अनटेम्पर्ड उसके ऊपर वर्डिक्ट दिया जाता है यार पूरी दुनिया में। आपका ख्याल है रेप की सजा के लिए 4 बंदे रेप करता हुआ देख रहे होंगे, उसका हथियार अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या बीएस है यार? एग्जैक्ट। तो भाई ये फिर इसके बाद फिर इस्लाम को जो है इस तरीके से प्रेजेंट करना दुनिया के सामने कि भाई देखो इसमें सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, हर चीज एकदम परफेक्टली बताई गई है। यार ये क्या बात है? यानी आपको विटनेस होगा तभी आप सामने वाले को मुजरिम साबित कर सकते हो। विटनेस मौजूद नहीं है तो क्या वो बाकी चीजें नहीं है? दुनिया इतनी एडवांस हो गई है भाई, डीएनए टेस्ट होता है, कितनी सारी मोबाइल टावर से आपका देखा जाता है कि आप वहां पे मौजूद थे या नहीं थे क्राइम सीन पे। कितनी सारी चीजों को लेकर जो है, इवन इफ वहां पे गवाही देने वाला कोई नहीं हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी आपने जो जुर्म किया है आप पकड़े जाते हो। लेकिन ये डंगर कह रहा है कि आई विटनेस नहीं है तो हद पनिशमेंट आपको मिल ही नहीं सकती।